मैंने क्वेश्चन करा था डिसाइड तुम्हारे लिए, बट लेट मी जस्ट उसको एक बार चैट जीपीटी से अच्छे से लिखवा लेता हूँ, सो दैट एम्बिग्यूटी ना रहे। ठीक है, तो सब लोग, सबसे पहले तो भाई आमिर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, सो ओके, स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ, स्टार्ट। Okay, so as you know, like as you have my resume, so you have my details, right? So I'll just go ऐसे नहीं through. बोलते हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन ऐसे बोलो कि जैसे इंटरव्यू में बोलते हो तुम। भाई ऐसे ही बोलता हूँ मैं। अरे अच्छा ये नहीं ठीक है. बोलना चाहिए, ठीक है। So I'll briefly explain my technical abilities and what tech stack I've been working on. So I'm 2023 graduate. Since then, I'm working at Lumo AI as a full stack developer. Uh, while working at the full stack at Lumo AI, I've been working with Next.js and SCSS in the front end. Along with that, I use Redux, Context, API, Material UI, all these UI libraries for front end. And for back end, I use like Node and Express. Along with that, I use MongoDB as a database. I have around 1+ year of experience at Lumo AI currently. ओके, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे देख, इतना कुछ नहीं बोलना होता है, ठीक है। Hmm. एक सेकेंड। युवराज, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, करोगे क्या? हाँ हाँ ठीक है. So yeah, hi, myself Yuvraj. I'm currently working as a full stack developer. I have a 4+ years of professional experience working in this domain. I graduated in the year 2020, and from there on, I started working with this company called Max AI. I joined there as an intern, and eventually, I was able to convert my internship into a full-time opportunity. So, in the initial days of my career, I adopted Python for software development and was also responsible for doing some data analytics tasks using pandas and other sci-fi libraries. Thereon, I continued development in Python for a year and so. Further on, I was promoted to a project called Instaminutes, where I adopted web technologies, working in web development, and thereon I started working with Next.js in front end and Node.js in back end. So yeah, so my core responsibilities working in Instaminutes was integrating third-party applications to the product, like Stripe integration, Google Cloud APIs, Microsoft Graph APIs, and all. Apart from that, I also integrated Slack, Notion, HubSpot. Yeah. So also, I was responsible for delivering end-to-end features from front end till back end, and I also managed a team of interns. Mentoring them, guiding them through the process, and yeah. So from there on, I started working in this project called Lumo, which is my current project. Here, I am part of the core engineering team, and I'm responsible for scaling up the backend from ground up. I have here I also delivered integrated third party libraries and everything, authentication, authorization, security auth, and I developed this microservice which would eventually in which would eventually decrease the latency and increase the efficiency of app, eventually reducing the eventually increasing the user experience and yeah, betterment of the product. ओके, अच्छा था ब्रो। द इट वाज अ गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। I had some feedback for Amir, but I think Amir do not have that much experience to include all these things that you have mentioned. So I think his introduction was also valid as a fresher. But Amir, you should refine it a little bit. थोड़ा higher level पे ज़्यादा बात करो. You don't need to get into that much details. ठीक है? Hmm. So that will be it. Hmm. ठीक है.
भानु तुम्हें भी हायर करना है लेवल क्या? पे एज इन कैसे, मतलब कि आई डन दिस हाँ, जैसे लाइक। युवराज ने मेंशन किया, आई हैव इंटीग्रेटेड आउटलुक्स लाइक एपीआईज, आई हैव वर्कड ऑन अच्छा। बैकएंड सिस्टम, extended it to make them scalable microservices, like things हम्म, like this. You don't need to go कि I worked on context, did that. I mean, बस mention कर सकते हो. While working on React, I got experience in working with Redux, context APIs, uh, web APIs, whatever जो भी तुम choose करो. ठीक है? ओके। तो these things तो हाई लेवल पे रखना है, बट तुम थोड़ा डिटेल दे सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास उतने एक्सपीरियंसेस नहीं है बोलने के लिए. यू हैव ओनली वन जॉब एक्सपीरियंस. ठीक है. हम्म, सो तुम डिटेल दे सकते हो, दैट इज वैलिड फॉर यू. वही मैंने पहले लगा मेरे को फीडबैक देना चाहिए, देन आई रियलाइज कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलने के लिए. अरे, ठीक है. सो दैट वाज गुड. तो आमिर मेरा भाई, एक एलएलडी का क्वेश्चन मैंने पोस्ट करा है डिस्कॉर्ड पे, यू कैन कॉपी पेस्ट दैट, बट इसको बाद में करते हैं. लेट्स गो थ्रू दी वर्बल क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट. ओके. ओके। So since it's a full stack interview, so first I would like you to, what I would like you to do is share your screen, open Excalidraw. Okay. Yes. Hmm. So now what I want you to do is I want you to share, uh, भाई क्या है ये? Bhai, bhai, Amir is letting his intrusive thoughts take over. अरे वो लिखा था भाई। ओके। तो ऐसे शिवम के सामने शेयर मत कर देना भाई, कि हाँ हाँ शिवम मैं डेमो शेयर करता हूँ, ये लो. ठीक है. तो ओके। लेट्स स्टार्ट विथ Amir. What is the components you understand in the full stack system? Like, let's say you have given a task to create a web application. So, from your thought process, tell me about all the components that you are going to build, or you think those are included in the web application. Any specific web application like Well, let's consider your current project. Okay, what elements do you think there are? And let's say if you think that few elements are missing from them, also mention that you think they should be there but they are not. um, According to you, give me a full picture of a web application, the backend, front end, and API services, whatever you think are included. Create a diagram for that. okay. I think question is understandable. Hmm. Right. So for so I'll categorize these things in few blocks, right? So the first block would be like the uh, tech that we use, the infrastructure and the tech that we use. So let's say for uh, we would need something like what would you use in front end, and then what would you use in back end in terms of tech. So that includes like let's say uh, what would I need in a full stack application? So I need a front end and back end. For front end, I need a framework, whatever like Next.js, any CSS library, framework, whatever. And I need testing. For backend, I also need something to write. For backend, I need like okay, this is a low level. सुबह फिर से क्वेश्चन बोलिए क्या है लाइक व्हाट आर दी components According to you, stakeholders. what are the components in a full stack application? Okay, let's say you have a Okay. full-fledged application. For an example, you can consider your current project wherever you are working. Okay, you are Mhm. working in Lumo AI, right? So, can you draw me a full architecture of a Lumo AI according to you, whatever you know? Okay. So in Lumo AI, we have a front end, we have a back end, and apart from that, like if I categorize backend, so inside the backend we have uh, user,
service, whatever service, uh, auth service. We have uh, other utility service, and for whatever like microservice, not microservice, and for front end we have uh, we have some protected routes, some private route, right? And both of them are interconnected with each other. And both of these two, like the backend is then connected to a database, right? And in between, we have, in order to optimize the database query, we have something like some queuing service to optimize the APIs, right? Uh, okay, so this is like a high level picture of what are the stakeholders that we have in a full stack application right now. Okay, okay. So can you give me more details on what is protected routes and private routes? Okay, so there are few routes. There are few routes that is protected, that is only accessible when user is authorized, right? And there are some routes that is open, that anyone can access, even if they are not logged in and even if they are not authorized. So let's say, just to give you an example, sorry, a protected and public route, not a private. My mistake. So a protected route is something that is authorized. A public route is something that is open. And we also have one private route as well. What was the private route? I'll just give you a brief idea. So private route is something that I have installed a middleware in the front end, index.js, and that middleware is only accessible to a specific user, right? Only a specific user. So that is something that is a private route. For a protected route, I've said like for user who are authorized. So let's say I'm accessing slash, let's say user page slash profile page or slash dashboard page. So these are the routes that is protected. And then there are like public routes. So that is like slash login page or slash sign up pages. So these are like public routes. These are the brief introduction about public, protected, Uh, and private. okay, I can understand these two things. I'm still not clear about the private route, like how it is different from protected route. Okay, so how is it different from protected route? So protected route, like every user that you have. So let's say in DB you have hundreds of users, right? And all those hundreds of users can access your slash dashboard, right? Slash dashboard. So they can access each one of them. So once user is logged in, means once user is authorized, uh, he or she can access every route that is inside this particular thing. But the private route is only accessible to one specific user that I want him, right? So let's say I want a user who has some specific email, let's say abc@gmail.com. I only want that user to have access to this private route. So in that particular case, I have implemented this private route. So only user with this particular email can access this particular this private route. So let's say I have something called log latency, right? Log latency route. So log latency right now at Lumo is a private route. It is only accessible to email known as like product at Lumo AI. Right? How I was able to do it is like I installed a middleware, and every route request is somewhat like mapped through this middleware. This is like that's how it happens. So inside this middleware, I check like if a user is trying to access that particular private route, and if user is from the allowed email, right? So that's how he will be able to access this private route. So private route is like if this is your protected route, so private route is something that is just like subsets of the protected route, and
every private route can access everything that you have in the protected route, but every protected route cannot access everything that you have in the private route. So this is the difference, if I'm able to Okay. say. Okay, so you are saying this middleware is only accessible to these private routes only, not for all the other No, routes, right? the thing is like middleware is something that is going to monitor every routes that a user is trying to access. So let's say if I have a dashboard, I have something like user page, and then I have slash latency page, right? So what is going to happen is like uh, uh, all of these through URLs is going to map through this middleware.js file that is in the server app.js app folder. And what is going to happen for this specific route? For this specific route, I'll have a condition. Like if a user is trying to access this particular route, I will try to check if the user is authorized, like if the user is someone who is allowed to access that particular route. So even though he is authorized, he is logged in, he has all those accounts, but he will not be able to access because this is only accessible to Lumo AI. This is not accessible to abc@gmail.com. So that is what a private route is. Okay. Okay. Okay, let's go further. Tell me how your front end is communicating with your backend. So yeah, so we use Axios to communicate with our front end, back end services, right? Okay. So yeah, we use Axios. Do you want me to draw like how is it doing happening and all? Yeah, I want you to draw the layer where your front end and back end are communicating. Okay, so I'll simply write. So what happened in Next.js that we are using in the app route we are using, right? So in Next.js we have Next.js, and inside that Next.js we have Next.js client, and then we have Next.js server, right? And then we have this backend service, right? Whatever the backend server we have. So what is happening is like, let's say I'm this client, I'm this guy, right? So I'm making a request to this service, right? Hello, Yeah, yeah, I'm listening. Go ahead. uh, I'll call you back. Sorry, my middle किसी HR का call है. अच्छा, so this client okay, हाँ, come here. Okay, so this is my Next.js front end, and this is like whatever backend that we are using. So what happened right now is like a client is making request to Next.js server component where we have a route file that is specific to the client that is pointing to, and inside this route file, this particular route file is pointing to this backend. So this is how things are happening. I'm calling APIs in the Next.js, and this gives you this gives you encapsulations. So like the client that is making request to the next backend is somewhat visible to your network, right? And the server that is making to the request to the backend, it is not visible in the network. So your backend route and URLs is safe somewhat, right? And that provides some sort of security that your backend APIs are not exposed. Okay. Yeah. Okay, So should we proceed to next question? right, right, right. Yeah. So tell me one thing. Why are you communicating like in two-step process? Why are you not communicating from client to backend directly? Okay. So the framework that we are using, React framework, that is an app.js app route in Next.js. This is the internal architecture of that particular Next.js. But right, I'll think about it. Why we are not using it, right? There are few advantages of not using directly and implementing this one-way route. So what is like two-step API calling is because first of all that I said like this provides us some sort of security. Like this is already encapsulated. This isn't visible, right? And what happens in Next.js, we have something called SSR. So what we can do is like if we have next every component in every page in Next.js is a by default is a server, right?
So what happened in SSR, server side rendering, is like you can directly make an API call, either get static prop and get server side props and all, and then that is going to make call to your backend. So if it is a client page, right? If it is a client page, we also wanted to reroute it through our Nexus server component, and then that is then rerouted to the backend services. We can make direct calls, but I'm not sure like why we don't make calls. Like I'll have to, I guess I'll have to read about it. Okay, you should not do that in interview, but okay. 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 Also, Amir, try to draw everything with proper blocks and lines and type. Don't use handwriting. Hmm. Because it may be able, you are able to follow it because you are writing it, but like when I'm looking into the drawings, I am able to understand that at that point of time, but after a minute I will forget why you wrote something. Hmm. Okay, so you should do a proper drawing with the boxes and lines and type everything instead of doing rough work. Hmm. Okay. Okay, let's go ahead and think about ask next question. So tell me, Amir, how are you, do you utilizing any security for communicating to backend to front end? Are you doing that? Right. So what we do is like we encode our whatever information that is that we wanted to keep it secure, like user ID, workspace, and whatever it is. So we encode it in base 64, and then we send it in headers such that it is not visible in payload. It is not directly exposed, right? So we do this right now. Okay, so what kind of headers are you sending? Can you give me Uh, a little bit? Yeah, so the headers that we're using is like bearer tokens that we are utilizing currently. Right? So that is one of the headers that we're utilizing right now. What is bearer token? So bearer token is one of the types of headers. Like ये technical इतना मेरे को idea नहीं है क्या है bearer token, but like it is one of the type of the authorizations, right? That we provide inside headers. तो एक नोट बना लो, you should read about headers, why and when they are be used. Okay, and there is no bearer token. You should tell this is Authorization. uh, authorization header. You should say authorization header. Okay, not the bearer. तो ऑल्सो भाई आमिर, जो ये हमने बेस 64 वाली इम्प्लीमेंटेशन की है ना भाई, ये किसी को नहीं बतानी. दिस इज अ वेरी पुअर इम्प्लीमेंटेशन. तो मतलब यू कैन से देम कि भाई नहीं, मैं. it's okay. You can say कि इनकोड करके भेज रहे हैं and all. They will not ask details कि क्या इनकोड करके भेज रहे हो and all. ठीक है. हाँ. Anyway, that's not very much problematic. He will not ask you in-depth implementation. They can ask you कि अच्छा what and how you are doing, like headers, what headers you are sending. So you can also read about headers, why and when certain headers are fetched or sent. Okay. So read about all those things. Authorization header. There are custom headers. Why and when you send custom headers, caching headers. These things you should know, because since you are a full stack developer, API communication is crucial part that you will be doing as a full stack developer. For the full stack developers, the main role is front end. There is a little weightage on the back end, but there is a good weightage on the communication between front end and back end. So you should know a little bit more about these layers. Okay. So API communication is very important. You should know why and when and how you are doing API communication and why you are doing it in certain way. Let's say you are including header, not including header, or when you are consuming data, what are the things you are sending and why you are sending those data. Okay. Hmm. So those things. So that should be there. एक एडिशन है मेरी तरफ से. जैसे वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि यू आस्क आमिर की एक्सप्लेन मी द कम्युनिकेशन बिटवीन. तो मेरे को ऐसा लगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये ऐसे स्टार्ट होना चाहिए था कि फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, लाइक
when a new user first interacts with the मतलब फ्रंट क्लाइंट, जब न्यू यूजर के लिए क्लाइंट बैकएंड से इंटरैक्ट करता है, सबसे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले दिखाना चाहिए था कि यूजर ऑथेंटिकेट कैसे होता है. वंस यूजर इज authenticated, a token is then returned, which is then stored to the local storage, and for further communication to the protected routes, ठीक है, user have to attach that token into the authentication header, and hence they will be authorized to use the protected headers. और मतलब वो लो लेवल जो डिजाइन डायग्राम आमिर बना रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि वो मतलब ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट होना चाहिए था. हाँ ठीक है. वन मोर थिंग यू शुड गाइस नोस कि बोलना पड़ेगा तुम्हें कि व्हाट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यू आर यूटिलाइजिंग. So one thing you should mention, we are utilizing JWT, and the another option which we are not utilizing is session ID implementation. Yeah, basically session ID cookie implementation. So we are not utilizing session ID communication. You are utilizing JWT. You should know pros and cons of both. Okay. Hmm. So why you are utilizing JWT? So next question could be, what are JWT? Like if I drill down on these components again, like after headers, if you mention, you should mention JWT in your answer, Amir, by the way. If you don't mention, I will give a negative feedback at that point only, because you are not understanding the API communication. Okay. So once you, my expectation from you will be in this portion of the interview, you should explain me what are headers and what type of authentication mechanism you are utilizing, session ID or JWT. And if you answer any of them, I will drill down on the both. Like if you answer session ID, I will ask about session ID implementation. If you answer me JWT, first I will ask you about JWT, what is JWT and how they are being used, and what are basic details of JWT, because JWT itself has a little bit of knowledge base, right? It has headers, encryption algorithm, what kind of validation, data time experiment and all. So there you should read about JWT a little bit. Then you should tell ki how you are utilizing JWT. जैसे युवराज mentioned कि after signing a token is returned, so you should mention कि token में what encryption you are doing inside the token, and what is how you are setting expiry time, or if you are not setting expiry time. These details you should mention. And after this, once all these details are established, you should also say कि I am saving JWT in browser's cookie, and I am sending cookies back and each request after the authentication is complete, right? And since you will mention expiry time, so you will also say कि after the expiration is done, we refresh the token, right? You should also talk about that mechanism. So these things you should know as a full stack developer. Okay. So next topic I would ask is I will ask about Redis. I think you should answer, even if you are not using Redis, you should mention that. Okay. You should say we are using Redis. Okay. So just read a little bit about Redis. बोल देना कि I have not worked on this layer. Like my senior developer has worked on this. I just utilize and know about it. थोड़े बहुत simple function देख लेना. You know कि Redis ये होता है वो होता है. ठीक है? Second question, second thing you may not ignore it, but अगर युवराज तुम्हारा कभी होता है, you should mention the rate limiting part. Okay. So rate limiting is a good thing. Amir, you should also read about it. तो LLD में मेरे को काउंटर क्वेश्चन आया था रेट लिमिटिंग पे कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग. हाँ तो वही कह रहा हूँ. तो LLD में आई वुड हैव गिवन क्वेश्चन, अभी जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है उसके अलावा द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू गाइस विल बी टू इम्प्लीमेंट द रेट लिमिटिंग. जो भी है रेट लिमिटिंग लाइब्रेरी. तो दिस गाइस यू शुड प्रैक्टिस. बहुत सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. तो प्रैक्टिस दिस. अभी तो मैं नहीं करा पाऊंगा लाइव. इसको लिख लो, दोनों लोग कर लेना. तो युवराज तुम्हें फ्लो में ये मेंशन करना जरूरी है. आमिर यू कैन ऑल्सो मेंशन, बट तुमसे कोई डिटेल पूछे तो बोल देना कि आई हैवंट इम्प्लीमेंटेड इट. आई नो हाउ. तुम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे सकते हो, तुम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. फिर भी तुम ये बोलना कि भाई मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आई नो दी ओवरऑल व्यू कि हाँ कैसे काम करता है. ठीक है. एंड क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, ये सब प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेना. ठीक है.
तो ये हो गया. एंड आफ्टर दिस, in the full stack interview, the focus is more on the back end side. The front end side, we haven't gone into detail of the front end architecture na, component composition, वो सब उतना जरूरी नहीं है. The API layer is very important. Headers, JWT, session ID, cookies, etc. Redis. ये rate limiting is important. The next layer after this, the next layer is middleware. Okay, so the next question I would ask about what are middlewares, how you utilize them in your project. Okay, so you should talk about the authentication middleware, role checking middleware. Even though we don't have them, you can mention that to impress. Okay, we use role based mechanism and all, है ना. तो बोल दो मिडलवेयर, 3 मिडलवेयर यूज करते हैं बोलना. एक हो गया तुम्हारा ऑथेंटिकेशन का, दूसरा बोल देना लॉगिन का, तीसरा होता है रोल का, या कुछ और पढ़ लेना यार, यूज केस अगर कुछ हो सकता है ना दैट. एग्जिट मतलब वही रिक्वेस्ट के अंदर जब लॉग भी हो सकता है, एक लॉग. अबे ऑथ लॉगिन सेम होता है. नहीं नहीं सुधीर, जो जब आप जैसे जो उसको टोकन असाइन करते हो ऑथेंटिकेशन पे, तो जो ये मिडलवेयर होता है ना, ये इनिशियली भी लग सकता है और जब रिक्वेस्ट निकल रही होती है तब भी लग सकता है. भाई ये तो बाय डिफॉल्ट नॉलेज है युवराज, ये तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है. यू शुड टेल दिस मिडलवेयर इज यूज्ड टू मॉडिफाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बोथ. ठीक है, बोल देना कि रिक्वेस्ट एंटर्स इनटू द बैकएंड सिस्टम वाया मिडलवेयर एंड एग्जिस्ट वाया मिडलवेयर. ठीक है, ये बोलना जरूरी है. तुम्हें वो फ्लो पता होना चाहिए. रिक्वेस्ट इज इनकमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड, इट विल फर्स्ट लैंड टू अ मिडलवेयर, देन इट विल एंटर इनटू अ कंट्रोलर, देन कंट्रोलर विल रिटर्न सम रिस्पांस एंड दैट रिस्पांस अगेन विल पास टू द मिडलवेयर एंड देन मिडलवेयर विल रिटर्न रिस्पांस टू द फ्रंट एंड. ये फ्लो तुम्हें ड्रॉ करके दिखाओगे, इट विल मेक इम्पैक्ट. ठीक है, ये समझा. ओके. एक चीज बताओ, हम्म. जो रेट लिमिटिंग है वो भी तो मिडलवेयर से ही इम्प्लीमेंट करते हैं ना मोस्टली, तो वो भी तो मेंशन कर सकते हैं ना इसमें. हाँ कर सकते हो तो कर देना. हाँ मिडिलवेयर बोल देना, रेट लिमिटिंग मिडिलवेयर है. करेक्ट. हाँ, गॉट इट. ठीक है, एक रोल बेस्ड हटा के वो कर दो भाई. ऑथ रेट लिमिटिंग, पहला रेट लिमिटिंग होना चाहिए, देन ऑथ आना चाहिए, देन थर्ड वन यू कैन से कि लॉगिंग. लाइक और पूछेंगे क्या लॉग करते हो, तो बोल देना सिस्टम डिटेल्स, लाइक जेनेरिक डेटा. ठीक है, आईपीस ये सब, बिकॉज बोल देना वो सब हम रेट लिमिटिंग में यूज करते हैं आईपी वगैरह. तो वी नहीं तो वो डीबगिंग में भी हेल्प करता है, ये भी कह सकते हाँ हो. डिबगिंग में भी हेल्प करता है. ये सब मेटा डेटा बोल देना, सिस्टम मेटा डेटा, रिक्वेस्ट मेटा डेटा, ये सब. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेयर जो मैं थोड़ा सा मैं डिटेल्स पूछ सकता है कोई, अच्छा ऑथ में क्या करते हो, तो अगेन यू हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग्स, इनकोडिंग, डिकोडिंग, जेडब्ल्यूटी क्रिएशन, एक्सपायरी, एडिशन, ये सब. ठीक है. हाँ रेट लिमिटिंग में अगेन रेट लिमिटिंग का इम्प्लीमेंटेशन बता सकते हो. लॉगिंग में अगेन कि थोड़ा सा मेटा डेटा ही सेव कर रहे हो, नथिंग एल्स. ठीक है. ओके. The next layer again will come into the full stack development is राउट कंट्रोलर. तो देखो यार वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, तो वो तो तुम सिंपल अपना नोड जेएस का कर दो, तो नोड जेएस का बता देना कि राउट कंट्रोलर, डाउ लेयर, ऐसे डिवाइड किया हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन को. फिर नेक्स्ट जो पूछते हैं लोग, व्हाट डीबी, डीबी नॉर्मलाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अराउंड डीबी नॉर्मलाइजेशन, डीबी क्वेरीज, and how you are doing if you are utilizing sharding, indexing, और तो ये सब बताना पड़ेगा. तो यू शुड डीबी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, एक दो फॉर्म पढ़ लेना, 1B 2B जो भी होता है. ठीक है. हाँ भाई भानु बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. भाई एसिड भी पढ़ लेना और डर्टी रीड राइट्स पढ़ लेना. ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ये सब बेसिक है डेटाबेस का. बट ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन पता होना चाहिए. रीड राइट तुम्हें ट्रेड ऑफ पता होना चाहिए सिक्वल नो सिक्वल के. in which scenario what you use and why. Currently since you are utilizing NoSQL in Lumo, you should be able to answer why you chose NoSQL. ठीक है. क्वेरीज में दो तीन टाइप के क्वेरीज होते हैं यार, जैसे हम नॉर्मल क्वेरीज यूज करते हैं. ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन क्वेरीज होती हैं, तुम यूज नहीं करते हम लोग उसको यहाँ पे, बट यू शुड नो अबाउट दोस थिंग्स. ठीक है, तो ये पढ़. आफ्टर दैट आमिर तुम्हारा जो इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं यार. लॉगिंग, एक लॉगिंग कर सकते हो, बोल देना लॉगिंग के लिए बोल देना कि कुछ अलग नहीं करते हैं, वी यूज विंस्टन लाइब्रेरी. ठीक है.
या फिर टेलीमेट्री बोल दूंगा, वो तो यूज भी करता भाई। हाँ, जो अगर तुम कुछ पढ़े हो स्पेसिफिकली, तुम्हें उसके बारे में पता है तो भाई बोल दो। कुछ नहीं आइडिया है बोल देना, विंस्टन यूज करते हैं, देर आर सिंपल 3 kind of log, सक्सेस, एरर and warning type. We just log them with the certain information from the respective request, whatever we are doing. If you have authentication ये वो, तो वो tokens etc हम flag करते हैं वहाँ पे, we add information based on that, ठीक है। तो ये सब बोल देना, देन आई थिंक दैट्स इट। एंड आमिर, तुम्हारा जो इनिशियल डायग्राम है, इट इज बैड डायग्राम। एक्चुअली ड्रॉप पे जो तुमने बनाया है, द डायग्राम शुड लुक समथिंग लाइक जो मैंने बनाया था फास्ट एपीआई के सर्वर के लिए एक टाइम पे, आई गिव गाइस डेमो, वैसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। एक बड़े बक्से के अंदर भी छोटे बॉक्सेस होने चाहिए, जैसे तुमने बैकएंड के अंदर यू सेड ऑथ सर्विस, लॉगिन सर्विस, यूजर सर्विस, मिडलवेयर, तो यू शुड ड्रॉ ऑल दोज इन लेयर्स। बड़ा बॉक्स, उसके अंदर एक मिडलवेयर, मिडलवेयर में रिक्वेस्ट आता हुआ दिख रहा है, देन दैट रिक्वेस्ट पासेस टू 3 other blocks which can be user service, auth service, different service, utility service, जो भी है, then request is going back from that to middleware, then middleware is returning back to the next का backend वाला box, then वो box is returning back to the front end वाला box, ऐसे करके। ये बात समझ लो, तो इस टाइप का बढ़िया डायग्राम बनना चाहिए, और लेयर्स होनी चाहिए भाई। एक बड़ा बॉक्स है, तो फ्रंट एंड है, तो यू शुड ड्रॉ एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर 2 बॉक्स की, ये क्लाइंट और ये सर्वर साइड नोड सर्वर नेक्स्ट जेएस का, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन आ रहा है तुम्हारे बैकएंड को, और वो बीच में वहां पे एरो पे लिखोगे कि JWT हेडर्स, ये सब थोड़ा बहुत डिटेल्स, ठीक है। देन बैकएंड में जैसे तुम्हारा जो लेयर्स हैं, बड़ा बॉक्स, उसके अंदर मिडिलवेयर, मिडिलवेयर के बाद कंट्रोलर्स, बेसिकली उनको कंट्रोलर्स बोलोगे तुम, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर, कंट्रोलर, यूटिलिटी कंट्रोलर, ठीक है। थर्ड पार्टी कनेक्शन कंट्रोलर, जैसे ये जो स्लैक और हमारा स्ट्राइप कनेक्शन है, ये तो बोल सकते हो। देन उसके बाद एक बाहर अलग से बॉक्स बनेगा डेटाबेस का, उसके बीच में एरो डालो, बीच में लिखो कि रेडिश सर्विस, ठीक है। डेटाबेस है, नो सीक्वल मोंगो मेंशन करो। फिर इसके अलावा तुम्हारा एक अलग ही पूरा लेयर बनाओ तुम्हारा फास्ट एपीआई सर्विस का, बोल देना ये हमारा क्यूइंग सर्विस है फॉर पैरेलल कंकरेंट ऑपरेशन। उसमें डिटेल पूछे तो आमिर, अगर तुम्हें डिटेल पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बोल देना आई हैवंट वर्कड ऑन इट, आई जस्ट कंज्यूम द एपीआई, ओके। ठीक है। युवराज, तुमने काम किया, यू कैन गिव डिटेल्स एज वेल, कि यहाँ पे है, वर्कर है, जॉब है, एपीआई कंट्रोलर है, ये हमारा काफका है, रेडिस क्यू है, जो भी मेंशन करना चाहो, एंड वी आर कंज्यूमिंग ये वो, ठीक है। कोई तुमसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई हैवंट यू यूज्ड काफका, व्हाई रेडिस, तो तब बोल देना कि इनिशियली वी स्टार्टेड विद रेडिस, we will move to Kafka. We are doing experimentations when our service basically users load increases, कह देना अभी जैसे हमारे पास 10,000 यूजर्स रिक्वेस्ट आते हैं पर डे काइंड ऑफ, तो करेंटली Redis is able to handle that, but after the request count increases, तो बोल देना आई एम ऑनबोर्डिंग ऑन काफका, बोल देना कि आई एम experimenting with Kafka since it is new for me, I'm learning it, and we are planning to move from Redis to Kafka. Our initial implementation is in Redis because initially we do not have that much load, and Redis is able to do the job that we need, ठीक है। वी आर एबल टू हैंडल, बोल देना कि मतलब अभी हमारे पास कुछ 10,000 या 50,000 आ रहे हैं करेंटली इन स्ट्रेस टेस्टिंग, वी आर एबल टू डू 4 लाख या 5 लाख रिक्वेस्ट, नंबर ऐसे बोल देना कुछ गुड नंबर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना बिफोर डूइंग दैट नंबर, यू कैन एक्सपेरिमेंट दैट एंड सेव दैट, कि इतने नंबर तक अचीव कर ले रहा हूं मैं, एंड ये है, ठीक है। तो दिस विल बी इट। इसके अलावा अगेन एलएलडी क्वेश्चन आमिर जरा शेयर करना भाई अपना। भाई इसके अलावा एक जो मैंने देखा ना, वो पूछते हैं वो डिप्लॉयमेंट को लेके, तो उसमें क्या कर दूं? सॉरी, मैं कवर करना चाहता था, दिमाग से निकल गया। तो डिप्लॉयमेंट में तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना क्लाउड बिल्ड का बता सकते हो कि सीआईसीडी हमने गिटहब एक्शंस पढ़ लो, गिटहब एक्शन बोल देना कि हमारा जो सीआईसीडी सेटअप है गिटहब एक्शंस पे डिपेंडेंट है। सीआईसीडी में बोल देना कि हम जीसीपी यूज कर रहे हैं, जीसीपी में हम क्लाउड बिल्ड यूज कर रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट के लिए बोल देना हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है एंड वी आर यूटिलाइजिंग डॉकर्स, ठीक है।
तो डॉकर बनाते कैसे हैं ये सब पढ़ लेना, डॉकर फाइल देख लेना। ज्यादा कुछ डिटेल आई डोंट थिंक पूछना चाहिए, तुम फ्रेशर हो, बट नॉलेज तो रख लेना सबका। सीआईसीडी में स्टेप्स बता देना भाई। पुश होता है, वो पुश होता है तो हमारा क्लाउड रन बिल्ड, जीपीएस जीसीपी के सर्विसेज जो हैं, क्लाउड रन बिल्ड, क्लाउड डॉकर बिल्ड, जो भी होता है, भानु से डिटेल ले लेना, जो भी स्टेप्स हैं यू शुड मेंशन दो स्टेप्स। ठीक है, सीक्रेट मैनेजर पता नहीं भानु ने अभी लगा दिया है कि नहीं, तो बोल देना कि सीक्रेट मैनेजर से डिटेल्स आती हैं, डॉकर बनता है क्लाउड बिल्ड में, वो डिप्लॉय होता है, ट्रिगर्स लगे हैं, ये वो। ठीक है, ऐसे बोल देना। ठीक है, तो दीज विल बी दैट्स इट फॉर सीआईसीटी। आई थिंक डोंट थिंक इससे ज्यादा डिटेल कुछ पूछेंगे तो भाई मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम सही से बनाना भाई, डायग्राम पे लोग इंप्रेस होते हैं इफ यू नो द अच्छे से डिटेल। भाई हर स्टेप का वो पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से मैं भेज क्या रहा हूँ और वहां से मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ। यू शुड बी एबल टू टेल दोज डिटेल्स प्रॉपरली। ठीक है, कि यहाँ पे हेडर इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पे JWT हेडर में जा रहा है, यहाँ से ये रिस्पॉन्स वापस आ रहा है, ये सेव कर रहा हूँ, ये सेव नहीं कर रहा हूँ, ये सब डिटेल बताओ। कभी इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो तो वो भी बताओ, जैसे जब पासवर्ड भेज रहे हो तो बोल देना कि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट आता है, बट और सर्विस में जाने के बाद उसको हम इंक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव करते हैं, तो इंक्रिप्ट करके करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही कुड आस्क इज कि तुम वो कैसे करते हो, पासवर्ड मैच कैसे करते हो अगर वो इंक्रिप्ट कर दिए हो तो वहां पे बताओगे, सॉरी इंक्रिप्शन नहीं भाई, हैश करते हैं। हाँ, हाँ। तो हैश करते हो तो मैच कैसे करते हो, तो बोलना पड़ेगा कि bcrypt लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और इट देयर इज अ कंपेयर फंक्शन व्हिच मैचेस द पासवर्ड्स एंड ऑल, ऐसे बता देना। ठीक है, तो these things will be there I think, other than that I don't think there is anything else from my side। हाँ, वो बोला था मैं डिस्कॉर्ड ओपन करके, वो जो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैंने वही बोला है जो जो लिखा है। ठीक है, हाँ, ये जो डायग्राम है ना, इस टाइप के डायग्राम बनाओगे इट वुड बी ए गुड डायग्राम। ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन किस चैनल पे है? 10x 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 भाई, अच्छा 10x पे, ओके। यहाँ पे ये CSGO गेम सिस्टम का है। ठीक है, ओके, अनदर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, रेट लिमिटिंग। सेकंड क्वेश्चन बोल सकते हो, मेरे से एक बंदे ने पूछा था, उबर डिजाइन करने के लिए बोला था उसने। तो उबर का कॉन्सेप्ट देखो सिंपल है, वो क्वेश्चन लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से। दैट विल बी कि देयर इज अ कैब सर्विस, मतलब देयर इज अ कैब, देयर इज अ यूजर, यूजर कैन बुक अ कैब एंड कैब ड्राइवर कैन एक्सेप्ट द कैब, एंड एक लेयर आता है। हाँ, ऊपर बैकएंड, इसको लिखो फटाफट भाई, 5 मिनट है। देयर इज अ यूजर हु कैन बुक अ कैब। ठीक है, फिर नीचे आएगा नेक्स्ट स्टेप, देयर इज अ कैब ड्राइवर हु कैन एक्सेप्ट द कैब रिक्वेस्ट, सॉरी ड्राइव रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर तुम्हें ये हो गया बेसिक फंक्शनैलिटी। तीसरा चीज जो तुम्हें करना है, देयर विल बी अ पेमेंट सर्विस एंड पेमेंट सर्विस कैन बी अ डायनेमिक। ठीक है, एंड दैट डायनेमिक पेमेंट सर्विस विल डिपेंड्स अपॉन टाइम ऑफ द डे। टाइम डिपेंडेंट होता है रश आवर। यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, देयर वर 3 फैक्टर्स। आई थिंक डिमांड। तुमसे भी पूछ सकते हो, तो व्हाट डू यू थिंक? आईफोन एंड्रॉइड है या फिर नहीं भाई, वो नहीं है, Mac सिंपल देखो, जेनेरिक सोचो, ऐसे नहीं बताओगे वहां पे कि अच्छा आईफोन होगा एंड्रॉइड होगा, ये सब बकचोदी नहीं करनी है। सिंपल भाई देखो, टाइम डिपेंडेंसी होती है, रश रश डिपेंडेंसी होता है, और क्या फैक्टर करता है यार, रेन। डिमांड कितनी है भाई डिमांड, उस टाइम पे, कितने लोग? सर्च वही रेट, रश। हाँ, मतलब कंडीशंस और उसकी डिमांड, ये सब, मतलब जैसे रेन में होती है, जब बारिश होती है तो बढ़ जाते हैं रेट। हाँ, तो ये सब तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, तो 2 फैक्टर कर लो भाई, एक है रश एंड टाइम ऑफ द डे एंड अदर कंडीशन है। तो वो बंदा बोल सकता है कि जब तुम कैब ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, भाई तो मैं ये बता रहा हूँ बट इंटरव्यूअर नहीं बताएगा तुम्हें, ये तुम्हें खुद से डिडक्ट करना है कि जब बंदे का रिक्वेस्ट बुक कैब का करा, वो एक एपीआई सर्विस कॉल करेगा। हाँ। तो एपीआई सर्विस जब कॉल होगी तो प्राइस बाद में दिखता है, करेक्ट?
तो वो जो प्राइस दिखता है, तो वो प्राइस कैलकुलेट होने से पहले ये जो 3-4 कंडीशन है इनके थ्रू वो पास होने चाहिए फंक्शन तुम्हारे, फिर एक फाइनल प्राइस तुम्हें मिलनी चाहिए। ये समझ रहे हो? तो ये होना चाहिए, तो ये तुमको बनाना पड़ेगा। ये इसमें ट्रिकी यही है बेसिकली, उबर वाले क्वेश्चन में ये नहीं है कि सर्विस कैब आ गई, कैब रिसीव हो गई, वो बीच में जो प्राइसिंग लेयर है दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू मैनेज इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा फ्रेम करा लेना चैट जीपीटी से, और रेट लिमिटिंग हो गया, ये 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक और क्वेश्चन है भाई, बहुत जेनरिक है, पार्किंग लॉट। ठीक है, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चंस यू गाइस शुड प्रैक्टिस ऑन योर ओन विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशंस। ठीक है, और बाकी बाद में बात करते हैं। 11:58 हो गया, आई नीड टू गो। गॉट इट। ठीक है गाइस, चलो ठीक है बाद भाई, में कुछ डाल के क्वेश्चन। मैं भेजता हूँ।